मैं इस ब्रांड से थोड़ा डिसअपॉइंट हुई, मैं बता दूँगी। From that, I think it's I mean there is something कलर आया है इसका। ओके इतना वाइट ब्लीच मैं कभी नहीं कराऊंगी। Hi everyone, so today I'm gonna review two of the colors, two different brand colors, जैसा कि आप सबको दिख ही गया होगा टाइटल में। So one is this punk in the color Flamingo Pink, and the other one is from an Indian brand Paradyes, and the color is Rodulphi Blue. So basically I'm gonna do the comparison between these two. Earlier I did, and I know what are the results and which one is like better for me, but I'm just gonna show you both the colors. I'm gonna do the swatches on my hair so that you will be able to analyze how the color look like. So let me just partition my hair. Okay, so let's just do one thing. Now let me take two strands of my hair for a little experiment. These strands are not blonde kind of a blonde, it is more towards the darker side, because I don't want to bleach them again, as that might destroy my hair. And another reason was that I want to show you guys the result on a darker blonde hair. I mean, that's the Indian hair we are talking about, right? So we already have black hair, so bleaching them will result in blonde or a darker blonde like this. So yeah. Okay, now get set go. This is what my hair look like right now. Now we are going to do one strand with blue color and another with pink. First let's start with Bird of Paradise in Rodulphi Blue. So the jar comes with a lid inside to avoid any kind of a spillover, and it might get tricky because you have to wear gloves while opening it, because while opening you might get colors on your hand. So that's a bit of a tricky part, and as you can see here, I am having a pretty hard time in opening the lid. So yeah, now this is the blue color that I'm talking about. Here on the lid it is like kind of a dark blue, and let me show you the pink one as well. So pink one looks like it's a sort of a bright pink, not like a dark one. And oh my god, the smell it carries is so amazing, like a fruity sweet kind of a smell. So yeah, basically both colors have a strong kind of a fragrance, but personally if you'll ask me, I would love the pink fragrance over the blue, because blue kind of have like a mix sort of a fragrance. It's not fruity, I mean it's kind of a weird for me. Now meanwhile you guys see the process, let me tell you that I have used both the jars, like they're half used, and also you guys can get an idea while I'm applying the products on my hair, that how much quantity both products will be using. And as far as I have noticed till now, I would say like blue color uses a lot of quantity to do the same amount of hairs, while pink use a lesser amount of product for same amount of, I mean same quantity of hair. So the reason behind this is that a lot of product of blue stays on gloves and on your brush, and you'll figure it out when you'll wash your brush if you have this if you have two different kind of colors like I am having. So yeah, and apart from that, I think it's bit of a sticky, and I don't know, you'll see for yourself that what these products do. So yeah, that was my theory on the blue color. While if I think about the pink one, it doesn't like leave a lot of product on the gloves or on the brush,
but yeah, it leaves a good amount of color on the gloves that I have noticed. So this was my point number 1. And you guys, please don't forget to wear gloves, unlike me when I was applying this blue color. Avoid that. It is recommended to wear glove, and I am the fool here, so please don't mind that and ignore it. Also, you have to get the color onto every strand by using your hand, because brush won't do that for you. So that what I was doing. The question here is that what color is going to give a good result, the blue one which is using a more quantity, or the pink one which is using less quantity? So we are going to find that out together in this video. This brush is from when I used वो streak वाला जो hair color आता ना with all the pack. I think it's available in 2-3 colors. So उसके साथ आए थे ये brushes and I have used those color as well. तो आप वो video भी जाके देख सकते हो if you want. So now let's get started on to the next one. Okay, and I have washed the brush and dried it. Okay, my second point is that after the time for letting the product sit on your hair, the blue colored hair strand is still sticky, and you won't get an idea of the time that okay, this much amount of time which is recommendable has you have covered that. But for pink one, you'll get to know that because when pink one basically gets dried up after a certain amount of time, and I think it's approximately the same amount of time that you have to have the color on your hair. So you'll get an idea that okay, when you have to wash your hair. But I would suggest keep track of your time. So basically, after drying up, the pink strand would look it will dry up and it will feel like a jhadu kind of a structure. It will have that kind of a structure. So it doesn't leave any kind of color on your clothes after drying up. However, the blue might, because it doesn't dry up. It stays gelish like a kind of a structure. It just sit on your hair like a gel or something, you can assume, but it stays there. It doesn't dry up or something like that. So now going towards my third point here is that I'll show you the structure of these products. So basically the structure that pink one carry is more like a gelish kind of a structure, and personally I don't think that blue has that kind of a structure. Obviously it's way too different. Blue is more like running kind of a structure, and pink is gelish one. So we have talked about the packaging, the structure of the product, the fragrance it carries. Now let's come to the point where we talk about the quantity. For Bird of Paradise in blue color we get 120 grams, and for Punky in pink we get 100 ml. So I think the quantity is almost the same. I'll put the exact both the quantities in ml on the screen. Now next up we have is pricing. So I think both the products are fall in same kind of a category. They are from 500 to 1000 they range between, and it depends on the color also that you're getting, because obviously Funky is a US brand and it doesn't have any label that it should be sold on such and such price. So the price of that Funky brand varies a lot, and it can go till whatever the market has to offer. So basically I'm just gonna
give you the price, the current price that is there on Amazon for funky one, and I'll put the price of the blue one from Bird of Paradise, so you guys can like have a good look and compare. Also, I'll be putting the links for both the products down in the description box, so you can guys refer that if you are thinking of buying the products. बेसिकली ये दोनों कलर्स हैं, आपको दिख रहे हो तो दीज आर लाइक द कलर दैट विल लुक ऐसे हाथ में. सो मैंने दोनों स्टैंड्स को ही अच्छे से कवर कर दिया है कलर से. एंड नाउ इट्स टाइम टू सी कि ये कैसा कलर देते हैं, कितना पतला इसका कलर आ रहा है ऑन द वाइट बॉक्स, आई मीन ऑन द वाइट बैकग्राउंड. एंड इसमें भी वाइट बैकग्राउंड है बट इट डजंट लाइक उतना पतला नहीं आ रहा है इसका, और ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है इस पे, और इस पे वाइट वाले पे इट्स कम. आई मीन देयर इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट इन दो भी, मतलब टेक्सचर के अलावा ये. चलो एनीवे ये तो हमारा हो गया है. एंड इट्स 3:15. मैं हाफ एन आवर बाद यानी 3:45 पे आई वॉश दिस ऑफ, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती कि क्या कलर आया है इसका. इट्स वेरी इजी टू क्लोज. अभी आई हैव टू क्लीन द कॉर्नर्स एंड देन आई हैव टू क्लोज इट. बिकॉज ऑफ दिस ढक्कन. फिसले जा रही है. ओके. सो पहले हम पैराडाइज का देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है. इट्स पैराबेन फ्री प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, एंड देन यू हैव द इंस्ट्रक्शन आर रिटन. Apply the color and leave it for 10 to 20 minutes they have written. So still we are going for 30. Let's see उसमें क्या लिखा है, फिर देख के डिसाइड करेंगे. And then इन्होंने लिख रखा है apply, rinse, dry and all that stuff. And this bottle price is 795, यानी 800 something की 800 मान लो. Then lab tested, bottle is recyclable. Okay. So I think paraben free is the main content here. Then and made in India, of course. Then we have this bottle. Okay, this one is vegan, ammonia free, paraben free, PPD free. I don't know what is PPD. You can check it out. वरना मैं यहाँ लिख दूँगी. But this is मतलब इसमें ज़्यादा content है. Okay, they haven't written any kind of instruction or something like that, and the price is also not there. I bought it from Amazon or Flipkart. Amazon, I think. So just want to show you something quickly. This has like completely dried up. ये अकड़ने वाला state पे है, and no color is coming off. ठीक है. ब्लू वाला है स्टिल गीला, सो बहुत ही लाइट कलर आ रहा है बट आ रहा है. दिस इज़ द कलर दैट इज़ कमिंग. बहुत ही हल्का सा, इफ़ यू कैन सी हाथों में. सो बेसिकली दिस हैज़ लाइक कम्प्लीटली ड्राइड अप. जो वो नहीं होते अकड़ जाते बाल, वैसा ऐसी दे आर स्टैंडिंग लाइक ऐसे सीधा. वेराज ये बहुत ही ऐसे गिरा हुआ है बिकॉज ये अभी सूखा हुआ नहीं है, एंड ये सूखता भी नहीं है एक्चुअली. जब मैंने ट्राई किया, आई थिंक इट्स बिन 20 मिनट्स लिखा था, सो दे हैव लाइक रिटन 10 to 20 मिनट्स आपको कलर रखना है. बट आई थिंक आई स्टॉप दिस वीडियो ऑन 3:15 बिफोर, एंड अभी 3:45 होने वाले हैं. सो बेसिकली 25 मिनट्स हो चुके हैं इसको, एंड ये ड्राई अप नहीं होता है, एंड कपड़ों पे कलर छोड़ सकता है प्रोबेबली. यस, दोनों नहीं छोड़ा है, आई कैन सी ऑन द ब्लैक साइड, बट अब ये तो नहीं छोड़ रहा है.
ये अभी भी गिला है, सो दिस कैन डेफिनेटली लीव मोर कलर. सो अब मैं इसको धो के आती हूँ एंड देन आई विल शो यू कि किसका क्या कलर आया है. कि मैंने धो लिया है बालों को. अब मैं क्विकली हेयर ड्राई कर लेती हूँ जिससे आपको रिज़ल्ट दिख जाए. मैंने दोनों को अलग अलग धोया है, सो कलर पिगमेंटेशन का पता चल जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द आउटपुट जो दोनों कलर्स ने दिया है. ये दोनों ही ब्राउनिश टोन वाले ब्लॉन्ड हेयर्स पे किए थे मैंने. और पिगमेंटेशन एज यू कैन सी ज़्यादा है और इसका बहुत कम है. दोनों को मैंने हेयर ड्राई किया है. नथिंग, नो स्टेप इज चेंज. इसमें शाइनीनेस एंड स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है. Blue one has also the same kind of shine, but it doesn't carry the same kind of smoothness that pink has. बेसिकली मैं इस ब्रांड से थोड़ा डिसअपॉइंट हुई बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड था. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ट्राई. बट बेसिकली व्हाट दे आर ऑफरिंग इज़, अगर आप इतना वाइट ब्लॉन्ड कलर कराते हो, आई मीन इतना ब्लॉन्ड ब्लीच कराते हो, इतना वाइट आपका कराते हो, देन यू विल गेट दिस. ये कराते हो देन यू विल गेट दिस ब्लू. अदरवाइज आपको एज यू कैन सी जैसे ही वन टोन डाउन हुआ, यू विल गेट दिस different kind of blue. So basically I went for this blue and I got this blue. It was a disappointment for me because दोनों ही कलर सेम ही कलर टोन के बालों पे हुए हैं एंड इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है, मस्त है, whereas इसका इतना डल है ब्लू. ऐसा लग रहा है जैसे आई वॉश्ड इट फॉर 3-4 टाइम्स एंड देन ये कलर आया है. सो बेसिकली मेरे को लगा दिस कलर आई विल गेट. एंड पर्सनली इतना वाइट ब्लीच मैं कभी नहीं कराऊंगी बिकॉज इफ़ आई विल गो विद फॉर दैट मेरे बाल ही टूट जाएंगे सारे. एंड दैट्स फॉर लाइक एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हियर. जो भी इतना वाइट कराता है ना ब्लीच, उनके बाल हद से ज़्यादा डैमेज होते हैं. इवन इतने में ही आई हैव लाइक लॉट ऑफ डैमेज हेयर्स और उनकी स्ट्रेंथ, वॉल्यूम भी कम हो जाती है बालों की. सो दैट्स द इशू. एंड इफ़ दिस ब्रांड इज़ ऑफरिंग कि आप इतना वाइट पे ये ब्लू मिलेगा, देन दिस इज़ नॉट लाइक फेयर इनफ फॉर मी, आई गेस. So basically that was my honest review that I would preferably go with this brand Punky because obviously it's offering more, and if it like lies in the same price range, तो then there is no difference. And इसकी smell भी personally अच्छी है, texture भी it's good. ऐसा लगता है that see the quantity I'm sure definitely इससे कम होगी, but the quantity that is used on your hair दैट इज़ डेफिनेटली लेस फॉर दिस वन. ये बहुत ही कम लगता है बालों में, जैसा कि मैंने देखा है. ये बहुत ही ज़्यादा लगता है बालों में. एंड ये ब्रश पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रह जाता है आफ्टर लाइक यू हैव अप्लाइड. मैंने अच्छे से आपके सामने ब्रश पूरा साफ़ किया था. देन ऑल्सो उस पर व्हेन आई वेंट फॉर वॉशिंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा हुआ था, वेराज इस पर इतना प्रोडक्ट नहीं था. सो दैट्स द होल डिफरेंस विच आई सॉ फेस्ड एंड वही मैंने आपको बताया है. एंड दोनों को मैंने सेम ही टाइम तक रखा है, सेम टाइम पे अप्लाई किया है. इसको बल्कि बाद में किया था, सेम कंडीशन थी, सेम हेयर ड्राई किया है दोनों को साथ में. सो दैट्स द लाइक कंप्लीट पिक्चर जो भी मैं आपको दे सकती थी. एंड इफ़ यू वांट टू सी कि वो स्ट्रीक कलर जो मैंने आपको बताया था वो कैसा लाइक उसका कैसा रिज़ल्ट था, दैट वाज आल्सो लाइक kind of a similar blue, and the result that product gave me was better, much better than this one. So you can definitely go and check that video out on my YouTube channel, and I'll see you next time with another video. Bye.